Hello everyone, myself Sopan Joshi. Welcome to my YouTube channel SJ Commerce Classes. Students, today we will learn or discuss class 12th accountancy. Topic ratio analysis. As per Gujarat Board, this lesson is accounting ratio. As per NCRT, CBSE board, ratio analysis. This is the easiest lesson in the accountancy. Okay. आगे अगर आपने चैनल देखा हो तो आपको पता ही है कि कॉमर्स रिलेटेड स्टैंडर्ड 11th and 12th गुजरात बोर्ड एंड CBSE बोर्ड रिलेटेड it videos we are uploading. So now we are starting the ratio analysis. It is a method or process by which the relationship of items or groups of items in the financial statement are computed and presented. Is an important tools of financial analysis. Ratio analysis is used to interpret the financial statement so that the strength and weakness of a firm, its historical performance and current financial condition can be determined. Through ratio analysis, we can understand the परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनी फर्म, कोई भी जो फर्म होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की एक मेथड है अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, और उसके बेस के ऊपर और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता चलेगा. मीन्स उसकी लिक्विडिटी कितनी है, सॉल्वेंसी कितनी है, दिस ऑल. नाउ रेशियो, अ मैथमेटिकल यार्डस्टिक्स that measures the relationship between two figures or groups of figures which are related to each other and are mutually interdependent. It can be expressed as a pure ratio, percentage or as a rate. रेशियो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो रेशियो के ऊपर से क्या पता चलता है? रेशियो के ऊपर से पर्टिकुलर कोई भी दो फिगर के बीच का रिलेशन क्लियर होता है. ओके. Then ratio will be expressed in the percentage, as a rate or as a time. Words of caution: a ratio is not an end in itself. They are only a means to get to know the financial position of an enterprise. Computing a ratio does not add any information to the available figure. It only reveals the relationship in a more meaningful way so as to enable us to draw conclusion therefrom. रेशियो के बेस के ऊपर से हमें क्या पता चलता है? थ्रू दिस रेशियो वी कैन अंडरस्टैंड द पोजीशन, और इसके बेस के ऊपर वी विल टेक द डिसीजन. इंटरप्रिटेशन हम इसके बेस के ऊपर कर पाएंगे. यही इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए हेल्पफुल रहेगी. सी यूटिलिटी ऑफ रेशियो. Accounting ratio are very useful in assessing the financial position and profitability of an enterprise. रेशियो किसके लिए हेल्पफुल है? तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए. हाउएवर इट्स यूटिलिटी लाइज इन कंपैरिजन ऑफ द रेशियो. फिर वो कंपैरिजन खुद की फॉर्म के साथ भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन के साथ हो सकता है, कॉम्पिटिटिव फॉर्म के साथ भी हो सकता है. कंपैरिजन मे बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फॉर द सेम एंटरप्राइज ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर टू एंटरप्राइज इन द सेम इंडस्ट्री, फॉर वन एंटरप्राइज अगेंस्ट द इंडस्ट्री एज अ होल, फॉर वन एंटरप्राइज अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, एंड फॉर इंटर सेगमेंट कंपेरिजन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. खुद की ऑर्गेनाइजेशन में भी रेशियो का कंपेरिजन इजीली हम कर पाएंगे, अनदर कॉम्पिटिटिव फर्म के साथ भी कर पाएंगे, पर्टिकुलर कोई एक प्रोजेक्ट में भी कर पाएंगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो. रेशियो कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स: लिक्विडिटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो. मीन्स रेशियो का अगर क्लासिफिकेशन करने जाए तो कितनी तरह से हो सकता है? 4 वे: लिक्विडिटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो. नाउ दिस 4 व्यू पॉइंट वी विल स्टडी इन डिटेल.
See, liquidity ratio. This ratio analyzes the short-term financial position of a firm and indicate the ability of the firm to meet its short-term commitments out of its short-term resources. लिक्विडिटी रेशियो किसके ऊपर ध्यान देता है? तो शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर ध्यान देता है. किसके बेस के ऊपर कैलकुलेट होता है? दिस इज फोकस ऑन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी. ओके, दिस आर ऑल्सो नोन एज सोल्वेंसी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो को और हम क्या बोल सकते हैं देन? सोल्वेंसी रेशियो. द रेशियो विच इंडिकेट द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म आर करंट रेशियो और liquidity ratio or quick ratio or acid test ratio. First one is the current ratio, another one is the quick ratio or acid test ratio. See, first one current rate ratio. पूरे लेसन में अगर सबसे easy अगर कुछ हो तो this current ratio. It is calculated by dividing current assets by current liability. यानी कि फॉर्मूला अगर चेक करने जाए करंट रेशियो का तो क्या होगा? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. Conventionally, a current ratio of 2:1 considered satisfactory. Ideal ratio current ratio में क्या है? 2:1. Current assets include inventories of raw material, work in progress, goods, finished goods, stores and spares. Sundry debtors, receivables, short-term loan, deposit and advances, cash in hand and bank balance, prepaid expense, income receivable and marketable investment and short-term security are covered under the current assets. This we have already checked and we know very well that current assets में क्या आता है? इन्वेंट्री आता है, बैंक बैलेंस आता है, कैश बैलेंस आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, ओनली रिसीवेबल, डेटर्स, दिस ऑल आर इंक्लूड इन दिस current assets. Now current liability includes sundry creditors, bills payable, outstanding expense, unclaimed dividend, advance received, income received in advance, provision for taxation, proposed dividend, installment of loan payable within 12 months, bank overdraft and case credit. करंट लायबिलिटी जिसका टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर जिसका फिगर जो होता है वो चेंज हो जाता है, इज कवर्ड अंडर द करंट लायबिलिटी. ओके, नाउ point number 2 in liquidity ratio, quick ratio और acid test ratio. अनदर नेम में भी कहीं हेल्पफुल रहेगा, फॉर्मूला भी कहीं आ सकता है, शॉर्ट सम भी हो सकता है. दिस इज अ रेशियो बिटवीन क्विक करंट असेट्स and current liability. It is calculated by dividing quick current assets by current liability. Here quick ratio is equal to quick assets divided by current liability. और इसका जो वो आइडियल रेशियो है वो है 1:1. सी, क्विक असेट्स आर करंट असेट्स लेस प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री. जब कभी भी क्विक असेट्स कैलकुलेट करते हैं तो करंट असेट्स में से हम क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री को डिडक्ट कर देंगे. एंड क्विक लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी अपने पास जितनी भी थी उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को डिडक्ट कर दोगे तो देन यू विल रिसीव क्विक लायबिलिटीज. सो सिंपल था. क्विक असेट्स मीन्स करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री, एंड क्विक लायबिलिटी मीन्स करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट. वेरी गुड. नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज रेशियो, व्यू पॉइंट नंबर 2. This ratio indicates the long-term solvency of a firm and indicate the ability of the firm to meet the long-term commitment with respect to repayment of principal on maturity or in predetermined installment at due dates and periodic payment of interest during the period of the loan. Capital structure और leverage ratio किसके ऊपर वेट कर देते हैं? तो लॉन्ग टर्म के ऊपर. जैसे लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के ऊपर दे रही थी वैसे ही ये लॉन्ग टर्म के ऊपर. लिवरेज रेशियो अगर चेक करने जाएंगे, मेनली वी आर हैविंग 5 डिफरेंट रेशियो: डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो. नाउ इन दैट डेब्ट इक्विटी रेशियो, this is the simplest
दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी. डेप्ट और इक्विटी के बीच का प्रपोर्शन जो होता है वो किसके बेस के ऊपर पता चलता है, तो दैन डेप्ट इक्विटी रेशियो. इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड. डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. However, this standard should be applied having regard to size and type and nature of business and the degree of risk involved. लॉन्ग टर्म फंड में हम किसको कंसीडर करते हैं, लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसेट्रा. एंड शेयर होल्डर्स फंड, इन दैट इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस क्या करेंगे, फिक्टिशियस असेट्स. फिक्टिशियस असेट्स मीन्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डिस्काउंट on issue of shares or debenture, etc. Now proprietary ratio. This ratio indicates the general financial strength of the firm and the long-term solvency of the business. This ratio is calculated by dividing proprietor's fund by total fund. Means proprietor's ratio is equal to proprietor's fund upon total assets or total fund. As a rough guide, a 65% to 75% ratio is advisable. कौन सा आइडियल रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो में कितना परसेंटेज आइडियल है, दैन 65 to 75%. यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो या डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय 100 इन द फॉर्मूला. प्रोप्राइटर्स फंड वी नो दैट वेरी वेल, शेयर होल्डर्स फंड और प्रोप्राइटर्स फंड बोथ आर सेम. Total funds or total assets are all fixed assets and all current liability. Alternatively, it can be calculated as a proprietor's fund plus long term fund plus current liability. Means balance sheet का एक साइड का टोटल जो होता है वो. Debt to total capital ratio. In this ratio, the outside liabilities are related to the total capitalization of the firm. It indicates what proportion of the permanent capital of the firm is in the form of long-term debt. So ratio will be debt to total capital ratio. नाम के ऊपर से ही पता चल रहा है. Debt means long-term debt upon shareholders fund plus long-term debt. Normally 2/3 is the ideal or satisfactory ratio. Means debt to total capital ratio कैसा होना चाहिए, 2/3. Then interest coverage ratio. This ratio measures the debt surviving capacity of a firm insofar as the fixed interest on long-term loan is concerned. It shows how many times the interest charge are covered by EBIT out of which they will be paid. This EBIT means earning before interest and tax. So interest coverage ratio is equal to EBIT upon interest. A ratio of 6 to 7 times is considered satisfactory. Interest coverage ratio of 6 to 7 times is satisfactory. ये one line answer और MCQ में helpful रहेगा. Higher the ratio, greater the ability of the firm to pay interest out of the profit. But too high a ratio may imply lesser use of debt or very efficient operations. Now next one, debt service coverage ratio. This is a more comprehensive measure to compute the debt servicing capacity of a firm. It shows how many times the total debt service obligation consisting of interest and repayment of principal in installments are covered by the total operating funds after payment of tax. So debt service coverage ratio is equal to interest after tax plus interest plus depreciation plus other non-cash expenses divided by interest plus principal amount. Ideal debt service coverage ratio का proportion था 2:1.
Now next topic, third viewpoint, profitability ratio. This is the most interesting. This ratio measures the operating efficiency of the firm and its ability to ensure adequate return to its shareholders. ये सबको profitability ratio सबको आते हैं. See, the profitability of a firm can be measured by its profitability ratio. Further, the profitability ratio can be determined in relation to sales, in relation to investment. कैसे हम उसको measure करेंगे? In respect of sales and in relation of investment. Mainly three points are covered in profitability ratio: GP ratio, gross profit ratio, NP ratio, net profit ratio, and expense ratio. Now first one, profitability ratio in relation to investment. So return on assets, so ROA, return on capital employed, ROCE, return on shareholders equity, ROE, earning per share, EPS, dividend per share, DPS, dividend payout ratio, D/P, and price earning ratio, P/E. First one, gross profit margin. This ratio is calculated by dividing GP by sales. It expressed as a percentage. So GP ratio is equal to GP upon sales multiplied by 100. A firm should have a reasonable gross profit margin to ensure coverage of its operating expense and ensure adequate return to the owners of the business, like shareholders. To judge whether the ratio is satisfactory or not, it should be compared with the firm's past ratio. Previous year के ratio जो होते हैं उसके साथ हम compare कर लेंगे. Or with the ratio of similar firm in the same industry or with the industry average. Now net profit margin or NP ratio. This ratio is calculated by dividing net profit by sales. It is expressed in percentage. This ratio is indicative of the firm's ability to leave a margin of reasonable compensation to the owners for providing capital after meeting the cost of production, operating charges, and the cost of borrowed fund. So NP ratio is equal to net profit after interest and tax upon net sales multiply by 100. यहाँ पे NP रेशियो में जो नेट प्रॉफिट लेते हैं वो कैसा होता है? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. नाउ नेट प्रॉफिट मार्जिन. Another variant of a net profit margin is operating profit margin. Operating profit margin is equal to NP before interest and tax upon net sales multiply by 100. Higher the ratio, greater the capacity of the firm to withstand adverse economic condition and vice versa. Now expense ratio. In that these ratios are calculated by dividing the various expenses by sales, like material consume ratio. So material consume upon net sales multiply by 100. Manufacturing expense ratio. So manufacturing expense divided by sales multiply by 100. Administration expense ratio. Then administration expense upon sales multiply by 100. Selling expense ratio. Selling expense upon sales multiply by 100. Operating ratio. Cost of goods sold plus operating expense upon net sales multiply by 100. And last one, financial expense ratio. Financial expense upon net sales multiply by 100. Operating ratio, whenever we are calculating this operating ratio, at that time cost of goods sold plus operating expense divided by sales multiply by 100. This operating expense में ये financial expense कभी भी cover नहीं होते हैं. Okay. Now expenses ratio. The expenses ratio should be compared over a period of time with the industry average as well as with the ratio of firm of similar type. Low expense ratio is favorable. जितना expense ratio कम आएगा उतना favorable है. The implication of a high ratio is that only a small percentage share
of sales is available for meeting financial liability like interest, tax, dividend, etc. जितना ये कम होगा एक्सपेंस रेशियो उतना ही ये मार्जिन ज़्यादा रहेगा ओनर्स के पास. Return on assets ROA. This ratio measures the profitability of the total funds of a firm. It measures the relationship between net profit and total assets. The objective is to find out how efficiently the total assets have been used by the management. ROA is equal to formula NP after tax plus interest divided by total assets multiplied by 100. So total assets exclude fictitious assets, we know very well, and we can utilize for this the real assets, as the total assets at the beginning of the year and the end of the year may not be the same. Average total assets may be used as the denominator. Now next one, return on capital employed or ROCE. This ratio measures the relationship between net profit and capital employed. It indicates how efficiently the long-term funds of owners and creditors are being used. Formula for this return on capital employed: net profit after tax plus interest divided by capital employed multiplied by 100. Capital employed denotes shareholders fund and long-term borrowing. To have a fair representation of the capital employed, average capital employed may be used as the denominator. Now next one, return on shareholders equity. This ratio measures the relationship of profit to owners fund. Shareholders fall into two groups: preference shareholders and equity shareholders. So the variant of return on shareholders equity are, so return on total shareholders equity is equal to net profit after tax divided by total shareholders equity or total equity shareholders multiplied by 100. Total shareholders equity is equal to include preference share capital plus equity share capital plus reserve and surplus less accumulated loss and fictitious assets. To have a fair representation of the total shareholders fund, average total shareholders fund may be used as the denominator. जब कभी भी हम कैलकुलेट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, एट दैट टाइम प्रोप्राइटर्स फंड में जो हम ले रहे थे सब कुछ यहाँ पे हम कवर अप कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट वन, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी. सो सेम फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड upon ordinary shareholders equity or net worth multiply by 100. So it include equity share capital plus reserve and surplus minus fictitious assets. Now next one, earning per share EPS. This ratio measures the profit available to the equity shareholders on a per share basis. This ratio is calculated by, so earning per share is equal to EPS is equal to NP after tax minus preference dividend upon number of equity shares. इससे क्या होता है कि पर शेयर की अमाउंट हमें रिसीव हो पाएगी. डिविडेंड पर शेयर DPS. This ratio shows the dividend paid to the shareholders on a per share basis. So your formula, dividend per share DPS is equal to dividend paid to ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. जितना भी उनको डिविडेंड मिला है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा. नाउ डिविडेंड पे आउट रेशियो D/P. दिस रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्निंग्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड द डिविडेंड पेड टू देम. So formula for this dividend payout ratio is equal to total dividend paid to ordinary shareholders divided by net profit after tax minus preference dividend multiplied by 100. Or another formula for DP ratio or dividend payout ratio, dividend per share upon earning per share multiplied by 100. Now next one, price earning ratio
or P/E. This ratio is computed by dividing the market price of the shares by the earning per share. It measures the expectation of the investors and market appraisal of the performance of the firm. Price earning ratio is equal to market price per share divided by earning per share. अगर प्राइस अर्निंग रेशियो फाइंड आउट करना हो तो क्या था, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. Now last viewpoint, activity ratio. This ratio are also called efficiency ratio or assets utilization ratio or turnover ratio. This ratio shows the relationship between sales and various assets of a firm. Here mainly comprise inventory or stock turnover ratio, debtors turnover ratio, and average collection period, assets turnover ratio, creditors turnover ratio, and average credit period. So first one, inventory or stock turnover ratio. This ratio indicate the number of times inventory is replaced during the year. पूरे साल में inventory कितनी बार फर्म में से चेंज हो रही है. It measures the relationship between cost of goods sold and inventory level. So here inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold upon average stock. Average stock हमें कैसे मिलेगा, opening plus closing divided by 2. And or another formula for inventory turnover ratio, sales upon cost of closing inventory. The stock turnover ratio of firm should have neither too high nor too low inventory turnover ratio. Too high a ratio may indicate very low level of inventory and a danger of being out of stock and incurring high stock out cost. On the contrary, to lower ratio is indicate of excessive inventory entailing excessive carrying cost. Means ना ही ये बहुत हाई होना चाहिए ना ही बहुत लो होना चाहिए, otherwise there will be a fact. Debtors turnover ratio or average collection period. This ratio is a test of the liquidity of the debtors of a firm. It shows the relationship between credit sales and debtors. इसके ऊपर से आइडिया आता है कितने टाइम पीरियड में हमें अमाउंट वापस मिलेगी. सी debtors turnover ratio is equal to credit sales upon average debtors and bills receivable. मीन्स ओपनिंग के डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग के डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो वो आएगा आपका एवरेज. एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू मंथ और डेज, जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना हो वो ले लेंगे. मंथ लेने हो तो 12, डेज लेने हो तो 30, डेज लेने हो तो 375 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर, जो आपका आंसर आया था वो. दिस रेशियो आर indicative of the efficiency of the trade, credit management. A high turnover ratio and shorter collection period indicate prompt payment by the debtor. On the contrary, low turnover ratio and longer collection period indicate delayed payment. In general, a high debtor turnover ratio and short collection period is preferable. Preferable क्या होता है, high debtor turnover ratio है वो preferable होता है. Now assets turnover ratio. Depending on the different concept of assets employed, there are many variant of this ratio. This ratio measures the efficiency of a firm in managing and utilizing its assets. First one, total assets turnover ratio. So sales oblique cost of goods sold upon average total assets. Fixed assets turnover ratio is equal to sales oblique cost of goods sold upon average fixed assets. जो भी हम ले रहे थे वो उसके अपॉन में डाल देंगे. सी कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टॉप पोर्शन सेम, सेल्स अपॉन सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स or cost of goods sold upon net working capital. Higher ratio are indicative of efficient management and utilization of resources, while low ratio are indicative
of underutilization of resources and presence of ideal capacity. Now last, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज क्रेडिट पीरियड. जैसे डेटर्स का हमने फाइंड आउट किया था, सेम वे वी आर फाइंडिंग क्रेडिटर्स. अब वहां पे जहाँ पे डेटर्स वर्ड लिखा था, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. वहां पे सेल्स लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेस. सी, दिस रेशियो शोज द स्पीड with which payment are made to the suppliers for the purchase made from them. It shows the relationship between credit purchase and average creditors. Creditors turnover ratio is equal to credit purchase upon average creditor and bills payable. And average credit period is equal to months oblique days in a year upon credit turnover ratio. So higher creditor turnover ratio and short credit period signifies that the creditors are being paid promptly. अगर हायर रेशियो होगा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रॉम्प्टली उनको पेमेंट कर रहे हैं. एंड इट एनहेंस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्रेस द लाइक बटन, share to your friends and subscribe our channel for more and more accountancy and commerce related video. This lesson will be helpful in 12th also and college also in accountancy. Okay, thank you.